बाइनरी सर्च की बात करें तो बाइनरी सर्च अगर हम बात करें बाइनरी सर्च की, so binary search is works on, suppose हमारे पास क्या है, we have the number of element in this array, we have assigned these values, okay. In the binary array we always start from the middle element, we start the searching from the middle element. So in this case the first one we need to find the mid element. Which one is the mid element? To find the mid element we have to use a formula. That formula is a low plus high divided by 2. Low plus high divided by 2. But for that we need to identify what the value of low and high. So initially the low value is always the first index number, that is 0, and the high value is always the last index number. The last index number is a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So in that case our last index number is a 6. Now I have put here all the values 0 plus 6 divided by 2. So in that case I got the third number position, the index number of a third, okay, which is assigned in the mid. Now I want to check. So now mid value initially आ गया हमारे पास है, but if I am talking about if I want to compare this value with this value, so now we can see there is a mismatch. Okay, now we need to find this value in the remaining part. So our array is divided in two sections. Which two sections? Sorry. Our array is divided in two sections. Okay, the first section is the left part. The left part is a one section. Another one is the right section of this. This is called the right section. This is the left section. If our key value or a target is more than mid, so we have the two conditions. Maybe the mid value is more than key. Mid means I am talking about the array of mid, okay. Or maybe the array of mid is less than a key. We have the two procedure. So in this case the first one is our mid value is 40 and the target is 60. Our mid value is 40, target value is 60. So now we can see, अगर मान लो right value हमारे पास में क्या है, mid value is more than key, mid value is more than key. So in that case हमें कहां जाना है इसके अंदर, right direction के अंदर, so left. और अगर ये केस बनता है तो हमें जाना है right direction के अंदर. समझना ठीक है. अगर मान लो हमारे पास में क्या है, की जो है मिड से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपको क्या शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन के अंदर. अगर मान लो हमारे पास में की जो है वो लेस देन मिड है तो आपको राइट डायरेक्शन के अंदर, लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा. ओके, सो करंटली हमें कहां जाना है इसके अंदर, करंटली हमें मूव करना पड़ेगा लेफ्ट राइट डायरेक्शन के अंदर. राइट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करना है. तो राइट डायरेक्शन के अंदर चेक करेंगे तो हमारे पास में हाई वैल्यू तो ये है ऑलरेडी, तो हाई इज इक्वल टू 6. इनिशियली द लो इज इक्वल टू 0, बट करंटली वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ लो, नॉट द हाई. क्यों? क्योंकि हमारा राइट साइड है, तो राइट साइड के अंदर हाई की वैल्यू सेम रहेगी. वी हैव टू चेंज ओनली द लो. So how we can change the low value? So in that case the new low is equal to mid plus 1. Mid plus 1. This is the low value. Okay. So in that case the low is equal to mid plus 1. The new low value is
this, because our mid value is 5, so mid value is 3, 3 plus 1 is equal to 4, so my new value is 4. now अब हम चेक करेंगे कहां से, इस वाले के अंदर, ये वाला एरे जो हमारे पास में है, इस वाले एरे के अंदर मुझे चेक करना है. so my new array is this. that's my new array, 50, 60 and 70. this is my low, this is the high. low value is 4, high value is 6. now I need to find the mid element. so mid element means mid is equal to, again the same procedure, low plus high divided by 2. so 4 plus 6 divided by 2, it means the 5. the fifth index number is a mid value. so in that case the mid array, mid is equal to 60. why 60 हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास में we are talking about the array fifth location. so the array की fifth location पर we have the 60 value. okay, and our key value is what? our key value which I want to find, that is also a 60. okay, so now we got the value here. our key value is this is the key value, and this is the new mid value, which is the same. so I got the target, we have find the element. okay, now how to write the program for this? so the first one is in the main function, you just write here, the first one is a int, one array about the 6, 10, जितना भी हमारे पास में array लेना है. in this array we have some element like 10, 20, 30, 40, 50, 60. after that we require the left and right. okay, so the left is low and high. so low is equal to 0 first time, high value is n minus 1. our number of elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6. so the high value is n minus 1. so I have high value is 5. okay, so next one is after the low and high we require the key value which we want to find in the array. so the key value maybe we can consider the 50. after that firstly we start with the loop, int I is equal to 0 to I less than equal to 6 तक or 5 तक. okay, and I plus plus. in this array, in this loop, firstly find the value of mid. so mid value is low plus high divided by 2. okay, this is the formula of a mid. and then the next step is, if array of mid is equal to key, so in that case just write a statement that we have found the element. so element found, and after that write here the break, terminate all the process, terminate the complete process. okay, suppose if we not found, so in that case we write the else condition. under the else we just compare the mid value with the key value. okay, suppose our mid value, array of mid is more than key, so in that case अगर mid ज्यादा है हमारे पास में key से, so in that case our high is equal to mid minus 1. और else के अंदर
in the else, low is equal to mid plus 1. That's it. This is the program. Any confusion, any doubt? So by this you can write the program. This is a very easy program. You can write the algorithm also. Okay. And this is the very easy program. If we talk about कि अगर linear की बात करें तो linear के अंदर we are searching the element start from the 0 to n. But here we can find the element maybe मतलब more less than locations. So अगर मान लो मुझे सेम इसी प्रोग्राम के लिए मैं अगर यहां लिख रहा हूं सपोज टू ये मान लो मेरा एरे है ओके ये मेरा एरे है सपोज टू तो मेरे पास है मिड एलिमेंट और मेरा की जो एलिमेंट है जो मुझे फाइंड करना है वो मान लो मेरे पास है 40 है तो मेरा मिड क्या हो जाएगा डायरेक्टली यहां पर 0 प्लस 1 2 3 4 5 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 हो गया हमारे पास में तो एरे जो मिड की वैल्यू हमारे पास है वो सेकंड लोकेशन 0 1 2 तो ऑटोमेटिकली ये 30 को हमारे पास कंपैरिजन नहीं हो रहा तो ये हमारा कंपैरिजन फर्स्ट हो गया जहां पर हमारा फेल हुआ है वी आर काउंटिंग द कंपैरिजन तो फर्स्ट कंपैरिजन हमारा फेल हो गया सेकंड अब हम क्या करेंगे 40 हमारा इससे ज्यादा है इसके अंदर तो यहां पर हम चेक करेंगे कि एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा राइट साइड के अंदर सो अगेन अवर लो इज चेंज सो अकॉर्डिंग टू दैट वी फाइंड द मिड वैल्यू सो लो इज हाई सेम बट लो इज 3 ओके क्योंकि 2 प्लस 1 हो गया है मिड हमारे पास लो सो इन दैट केस 7/2 3.5 और 3 so in that case you can find the value here with this is a third position so our key value is 40 तो 40 हमने यहां पर फाइंड हो गया so this is the second comparison so why the two comparison we can find the value but if I am talking about the linear search we have to find the 40 compare the 40 with the 10 compare the 40 with the 20 40 with the 30 40 with the 40 so अगर मैं linear search की बात करता हूं अगर मैं लीनियर सर्च की बात करूं यहां पर तो लीनियर सर्च के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो कंपैरिजन है वो हमारे पास में होंगे 4 अगर मैं बात करता हूं बाइनरी सर्च के अंदर तो बाइनरी सर्च में जो टोटल कंपैरिजन है वो है 2 सो इन दैट केस अवर बाइनरी सर्च इज बेटर देन द लीनियर सर्च पर देयर इज वन डीमेरिट इन द लीनियर सर्च लीनियर बाइनरी सर्च के अंदर प्रॉब्लम क्या है बाइनरी सर्च के अंदर आपका रिस्ट्रिक्शंस है you have always used the shorted element unshorted element हम यूज नहीं कर सकते सपोज 20 10 30 40 50 30 नॉट लाइक दिस तो टू जो हमारे पास में प्रॉब्लम्स है ड्रॉबैक्स है द फर्स्ट ड्रॉबैक यू हैव ऑलवेज यूज द शॉर्टेड एलिमेंट्स ओके द सेकेंड थिंग इज द रिपीटेटिव वैल्यूज आर नॉट एक्सेप्टेबल तो 10 10 2 बार यूज कर लिया 2 टाइम यूज किया दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल तो देयर आर द टू ड्रॉबैक्स इन द बाइनरी सर्च बट लीनियर सर्च के अंदर इट कैन वर्क बड़ा पॉइंट इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क थैंक यू